अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल है? तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और नई स्ट्रीम के साथ एंड एक बिल्कुल ही नए टॉपिक के साथ। सो इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी स्ट्रीम्ड। और आज जो है हम एक कम्प्लीटली न्यू थिंग ट्राई करने वाले हैं। इसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की, बट सी एल आई बेस्ड टूल्स हमने काफ़ी बनाए हैं, सी एल आई बेस्ड पैकेजेस हमने काफ़ी बनाए हैं इन द पास्ट। आप लोगों को याद होगा, वी वर एक्चुअली क्रिएटिंग एन पी एम पैकेजेस एंड दे वर ऑल सी एल आई बेस्ड, अगर आपको याद होगा। सो दोज वर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट एंड एन पी एम। बट अब जो है हम लोग ट्राई करेंगे सी एल आई बेस्ड कोडिंग एजेंट्स, जो जिनमें से हमारे पास क्लॉड कोड है, जेमिनाई सी एल आई है, और इस तरह के बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से क्वेन में भी आते हैं, क्वेन के मॉडल्स में। बट स्पेसिफिकली आज रात हम लोग जो है बात करेंगे जेमिनाई सी एल आई के बारे में, एंड वी विल बी एक्चुअली बिल्डिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द जेमिनाई सी एल आई, ओके, यूजिंग जेमिनाई सी एल आई। सो लेट्स स्टार्ट एक्चुअली। और रात के बज रहे हैं 2:37 एंड अगर मैं बोलूँ तो मुझे कभी कभार जिन चढ़ जाता है, अजीब काम करने के। completely from scratch try करेंगे Gemini CLI. Let's go with that. And I'm very excited to just try it out. Let me check if the stream is actually working. uh, stream अगर काम कर रही है, let me check. It will take a little while just to check everything. Till then we can just open the tabs. I would say let me just open this one and let me write Gemini CLI. Oh, okay. So Gemini CLI जो है, it's basically this one. मैंने जो है इसको सिर्फ खोल के इसकी वेबसाइट देखी थी। अभी पहली बार हम इसको जो है ट्राई करने वाले हैं। Are you seeing timeout for 29 error in Gemini CLI? Okay, so there are some errors too, क्योंकि ये चीज़ जो है अभी currently development phases में है। Let me check if the stream is actually working. I don't know कि stream काम कर रही है कि नहीं. Someone can just confirm me with that. But this is the Gemini CLI actually. Let's just copy this npm install dash g google slash Gemini CLI. Okay, तो ये npm पे install होती है हमारे पास. Uh, okay, we will just create a project in the desktop. Here, let me, और global था actually मैं, आई डोंट नो, जेमिनी CLI के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं. एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट्स, लेट्स गेट विद get an overview. This documentation provides a comprehensive guide to installing, using, and developing Gemini CLI. This tool lets you interact with Google models, Gemini models through a command line interface. Okay, Gemini CLI brings the capabilities of Gemini models into your terminal in an interactive read, eval, print, loop, print loop. Okay, REPL environment. Gemini CLI consists of a client-side application package/CLI that communicates with the local server package-core, which in turn manages requests to the Gemini API and its AI models. Okay, so एक लोकल सर्वर है हमारे पास packages/core और packages/CLI, जिसके अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन होती है जेमिनी के मॉडल्स के साथ. Also contains a variety of tools for tasks such as performing file system operations, running shells, and web fetching, which are managed by packaging/core. Okay, so हमारे पास जो है ऑनलाइन सर्च भी है, हमारे पास फाइल ऑपरेशंस भी मौजूद है, which is a little scary because it has access to your computer. And apart from that, you have navigating the documentations. This documentation is organized into the following sections: Gemini CLI Quick Start,
Let's see what is this. Welcome to Gemini CLI. This guide will help you install, configure, and start using the Gemini CLI to enhance your workflow. Right in your terminal. Okay, पढ़ लिया है हमने. Start, install, authenticate, and configure, and use Gemini CLI. Okay, so install करना है, authentication होगी, लाजमी बात है, और configuration होगी इसकी, and then we will start using the Gemini CLI. मैंने कभी use नहीं किया, so I will be just exploring lots of things in this one. Gemini CLI brings the power of advanced languages models directly into your command interface. Okay. ये तो हमें पता चल गया है. The standard method to install and run Gemini CLI uses npm. Once CLI is installed, use run Gemini CLI in your command line. Okay, so globally install हो रहा है, and we will be installing it globally. Then for the installation options, see the Gemini CLI installations. Okay. Then authenticate. To begin using Gemini CLI, you must authenticate with a Google server service. The most straightforward authentication uses your existing Google accounts. So run Gemini CLI after installation. Gemini इस तरह से run करना है. Okay. When asked how would you like to authenticate this for this project, log in with Google को select करना है. Select your account. Click on sign in. Okay. And for your authentication options and information, see Gemini CLI authentication guide. So the setup is here. I think we would need this in a little while. Apart from that, configuration contains Gemini CLI offers several ways to configure its behavior, including environment variables, command line arguments, and setting files. To explore your configuration options, see Gemini CLI configuration. Okay, this is another guide that we'll be using in a while. And how to use this. Once installed and authenticated, you can start using Gemini CLI issuing commands and prompts in your terminal. Ask it to generate code, explain files, and more. Okay, to explore the power of Gemini CLI, just come here. It is the examples page. Okay, what's next? Finding out Gemini tools and CLI commands. Okay, so I will be just looking at the examples for now, as the examples are quite important. Rename your photographs based on the content. Okay, this is going to help me a lot because I find it very tiring to just rename my files sometimes. Scenarios, you have a folder containing the following files, photo 1, 2, 3, and give Gemini the following prompt. Rename the option photos in my photos directory based on their contents. Okay, so it can actually read the photos and actually open up the photos and look at their content, and then it will name it. It's quite getting personal actually. Google is invading our privacy. Gemini will ask for permission to rename your files, obviously, and then yes, allow once, and your files will be renamed. Okay, after just stealing the photo data. So yeah, the LLM will be trained on that. Sorry, Google, but I have to just say it. Quite too personal. I'm going to use my local LLMs for this purpose instead. Okay. I don't know why the stream not working. Let me just look into this issue. There was a problem while acting. Turning, Gemini. Okay. Let me look into this problem first. I'm facing some issue regarding the video playback actually. I'll be searching for my channel here. Oh. What the hell? Let me look into this problem first. Okay, so the stream is actually working here. And yeah, it's okay. Then we should just continue. Explain a repository by reading its code is the second option. Okay, clone the chalk repository from the github /chalk/chalk, read its key sources files and explain how it works. This is a quite this one is quite a good use to it. First, it will ask for permission for the git clone to download the repository. Next, it will find the important source file and ask for permission to read them. Okay, and finally, after analyzing the code, it will provide a summary. These tools, I think, is quite an excuse to train our large language models.
because it requires some extensive consents for the training of your models if you really want to go out there and ask for consents to the from users to use their data to train your LLMs. So this way, you are getting actually leverage and an advantage by providing a tool that actually reads your data, and in that case, you are allowing the permission yourself, giving consents to these companies to train their LLMs for free because everything has a price. All I see is just free model trainings here. Okay, so let's continue. Else in the picture is gonna sue me. Results. So Gemini will perform a sequence of actions for you. Okay, we have read this one, and the Gemini CLI will return an explanation based on the actual source code. So the Chalk library is a popular NPM package for styling terminal outputs. Yeah, we have just abused this tool a lot. um, Combines two spreadsheets into one spreadsheet. Okay, this is a good use. Um, Scenarios. You have two .csv files, revenue and revenue 2023 and 2024. Each file contains monthly revenue figures like so. Okay, January, February, and so on up to December. You want to combine these two .csv files into a single .csv file. Give Gemini CLI the following prompts. Combine these two .csv file into a single CSV file um, with each year a different column. Okay, the result will be Gemini CLI will read the following files and then ask for permission to write a new file. Provide with permission, and the Gemini CLI will use a .csv file. Okay, so it will just kind of merge this file. Month 2023, 2024, January. Okay, this combined the data and it is now side by side as the column, just separated by the comma. Okay, comma separated values dot file. Okay, extension. Run unit test. Oh my god, this one is going to be fire. Unit test is actually the pain point of developers here. So I'm going to enjoy this one. Okay. Give Gemini CLI the following prompts. Write unit test for login.js, and results will be permission, and then it will just start using the code to read it and then provide you with the answers. So what library is it using? Actually, jest. Okay, jest.mock/API login jest.function, and describe login components. It renders the login form correctly. Okay. Rendering, and then expect get by label text username to be in the document. Okay, it is expecting all of this in the document. It shows an error message with invalid credentials. Async. Okay. It is actually it has written an extensive test for this login.js file, and these are all the examples. So it is important to just read the examples file because we just saw that it can perform file operations, and apart from that, it can write unit tests for you, which is also a file operation. But it can be used for office work also, which is quite impressive. And apart from that, you can use it for your repositories. It will just read the repositories and naming of your files and just much more. So yeah, it is going to be fun actually. And now the introduction of this tool, we have already quite explored some of its features and examples. Commands are a reference for all built-in slash commands. So slash help, slash chat, slash tools, and command custom commands. Create your own commands and shortcuts for frequently used prompts. This one is going to be very helpful. Headless mode. Use Gemini CLI programmatically for scripting and automation. Theme customizing the CLI theme and appearance. Okay, it is not quite necessary, but can be used for the dark mode. Keyboard shortcuts. A reference for all keyboard shortcuts can improve your workflow, and tutorials step by step for
common tasks. Okay, so all these links are going to be important. Okay, the advanced features. Checkpointing automatically save and restore snapshots of your session and files. Enterprise configuration, deploying and manage Gemini CLI in an enterprise environment. Okay, this is going to be useful. Sandboxing, my favorite. Isolate tool execution in secure containerized environment. Okay, I'm going to run some tools in sandbox mode. Configuring observability to monitor usage and performance, telemetry, token caching, optimizing API costs by caching tokens, and trusted folders, a security feature to control which folders, which projects can use the full capabilities of the Gemini CLI. Okay, ignoring files dot Gemini dot ignore. No, sorry, dot Gemini ignore exclude files and dictionaries from being accessed by tools. Okay, this one was necessary to read. And context files Gemini.md provides persistence, hierarchical context to the model. Okay. Non-interactive mode. Gemini CLI can be run in a non-interactive mode, which is useful for scripting and automation. In this mode, you pipe inputs to the CLI. It executes the command and then exits. The following example pipes a command to Gemini CLI for your terminal. Echo, what is fine tuning? And pipe Gemini. You can also use the dash prompt or dash p flag. Okay, Gemini dash p. What is fine tuning? This one will work. Okay. For comprehensive documentation on headless usages, scripting automation, and advanced examples, see the headless mode. Okay. I think we have just done quite enough. And after installation, you have to just know how to uninstall this thing. So if you just take off the plane, then you have to know how to land the thing also. We are going to go with the contingency plan now to just eliminate this evil banana if this go wild or if it goes bananas. Yes. Oh, npx run packages from temporary cache without a permanent installation. To uninstall the CLI, you must clear this cache, which will remove Gemini CLI and any other packages previously executed with npx. The npx cache is directory name underscore npx inside your main npm cache folder. You can find your npm cache path by running npm config get cache. Okay, so for macOS and Linux, which we don't have, so we are going to be exploring this command here. Okay, so we got double colon. The path is typically this path. Okay, for finding out this npm cache folder. And for the PowerShell, remove item dash path, join path in the local app data npm cache underscore npx. Okay, this command seems to be much easier than this one in terms of readability, but yeah, this one looks good and short. Using npm global install, npm uninstall dash g, and this will uninstall the Gemini CLI. This is the cache file. So if you uninstall the CLI globally, use the npm uninstall command with the dash t flag to remove it. Okay, so I guess we are just very good to go. And now we have the MCP servers. Here, if the MCP servers, we just discover this file, we are going to be reading this one. What is MCP servers? We are going to explore this one very quickly. But let's first just install this CLI tool. Okay, we have read quite enough for now. Where did it go? Okay, here it is. Let me just open the command prompt and we are going to run cmd. It is going to open the cmd and we're going to run this command here. npm install dash g @ google/gemini-cli. Okay, let me just
zoom in so you guys can see. Okay, it is going to take a while. Till then, we will just wait for this and तब तक हम रीड कर सकते हैं, कुछ और रीड कर सकते हैं, MCP सर्वर ही रीड कर लेते हैं बिकॉज वी आर हियर फॉर द MCP सर्वर्स एक्चुअली. IDE integration, IDE companion spec. So companion plugin interface specification, communication interface, plugin local communication channel, the must IDE server that implements the model context protocol. Okay, protocol. The server must be a valid MCP server. We recommend using an existing MCP SDK for your language of choice. If available endpoint, the server should expose a single endpoint /MCP for all MCP communication. Port the server must listen to a dynamically assigned port. This unknown port 0. Okay. I don't know why is it not playing, but okay. So discovery mechanism, the port file. For the MCP HTTP, we are going to go with this one. Okay, actually, what is an MCP server actually? An MCP server is an application that exposes tools and resources to Gemini CLI through the Model Context Protocol, allowing it to interact with external systems and data sources. It is a bridge basically, just to transfer your tools data to the LLMs. मिसाल के तौर पे ऐसा ले सकते हैं कि आपके पास पहले API हुआ करती थी, बट दिस इज़ लाइक अ मॉडर्न API, लाइक ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये API नहीं है. ये इटसेल्फ कुछ और है. पहले ऐसा होता था कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे होते थे चैट जीपीटी को कि यूट्यूब में जो फलाना वीडियो है, ठीक है, अब चैट जीपीटी के पास जो है पुरानी नॉलेज है, उसके पास अगर यूट्यूब के अंदर उस स्पेसिफिक वीडियो का उसको पता नहीं है, उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सो इट कैन नॉट आंसर यू. सो बेसिकली अगर आप MCP सर्वर यूट्यूब का लें और कनेक्ट करें चैट जीपीटी के साथ, नाउ इट हैज़ अ ब्रिज एंड इट हैज़ द नॉलेज ऑफ द करंट यूट्यूब चैनल्स एंड द वीडियो. So it will just get you that video and it can give you reviews on that specific content. So एक bridge बन गया. Now it has the context of that video. It's MCP servers actually, in simple terms. Okay. So server acts like a bridge between the Gemini models and your local environment or other services like APIs. An MCP server enables the Gemini CLI to discover tools, list available tools, their descriptions, parameters through standardized schema definitions, execute tools, call specific tools like tools with defined arguments and receive structured responses, access resources, read data from specific resources through the Gemini CLI primarily focuses on tool execution.
Okay, with the MCP server, you can extend the Gemini CLI's capabilities to perform actions beyond its built-in features, such as interacting with databases. अरे वाह, ये अच्छा हो जाएगा. APIs, APIs के साथ interaction होगी, custom scripts और specialized workflows. So ऐसा कर सकते हैं भाई, फिर तो अच्छा है. हम Gemini CLI को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. If we can just connect our own LLMs into this thing, that will do the work quite better. Okay, so now let's see core integration architecture. The Gemini CLI integrates with MCP server through a sophisticated discovery and execution system built into the code package. So package slash core slash source slash tools. And then we are going to discovery layer MCP client.ts. The discovery process is orchestrated by discovery MCP tools function, which iterates through the configured servers for your settings.json MCP servers configuration and establishes connection using appropriate transport mechanism STDIO, SSE, or streamable HTTP. Fetches tool definition from each server using the MCP protocol, then sanitizes and validates tool schemas for compatibility with the Gemini API, register tools in the global tools registry with conflict resolution, execution layer. Okay, MCP tools.ts. Each discovered MCP tool is wrapped in discovered MCP tool instance that handles confirmation logic based on the server trust settings and user preferences, manages tool execution by calling an MCP server with proper parameters, processes responses for both LLM context and user display, maintains connection state, and handles timeouts. So, transport mechanism. Gemini CLI support 3 MCP transport types. Okay, I guess wait a second. Okay, our package is installed. So okay, now we are going to write Gemini. Let's see. Let's wait. It is going to ask us about authentication. I remember from the authentication document, we had to write Gemini command actually. If we remember. Okay, let's see the authentication. You can run Gemini through the command line. We provide the following option, login with Google. Okay, but after which command? Okay, it is not quite much responsive, but let's see if we can get the installation guide from here. Quick start. Okay, run Gemini after installation, and this will ask us to just log in or sign up. Okay, this was quite a good start. Okay, installation. It is installed. Then we run this npx execution. Okay, npx execute the latest version from the npm without a global installation. Oh, we could have done this one, but कोई बात नहीं. हम लोग जो है करेंगे कुछ अब ग्लोबल इंस्टॉल हो ही गया है, सो या वी कैन जस्ट अनइंस्टॉल इट. और क्विक एग्जीक्यूशन के लिए इसको यूज़ कर सकते थे, बट कोई बात नहीं. रनिंग अ सैंडबॉक्स docker podman. Okay, for security and isolation Gemini CLI can be run inside a container. मैं यही करता भाई, but मेरे पास currently docker नहीं है because this is a new PC. This is the default way that this CLI executes tools that might have side effects. मैं सिक्योरिटी के मामले में बहुत कंसर्न इंसान हूँ, सो या आई विल जस्ट डेफिनेटली यूज द डॉकर.
Directly from registry, respect sandbox directly. This is useful environment where you can CLI using the sandbox flag and then prompt here. Blah 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 blah. Okay, so हम जो है यही आ गए हैं भाई. You are running Gemini CLI in your home directory. It is recommended to run in a project specific directory. अरे wow, we got a beautiful Gemini ASCII art. Ah, this one is good. Ask questions, edit files, or run commands. Be specific for the best results. Create Gemini.md files to customize your interaction with Gemini. Okay, create कर लूँगा भाई. And slash help for more information. How would you like to authenticate this project? ऐसा करता हूँ कि इसको मैं already install तो हो गया. So we will be just building a project, okay? Let's come here and let's come here, create a folder. It is also a home directory, but what can we do is that Gemini CLI test. Let's just open it, run the CMD here and run Gemini here. अब हम लोग ट्राई करेंगे जेमिनाई को. यही से ऑथेंटिकेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज वी कैन जस्ट एक्सप्लोर मेनी ऑप्शंस एंड एक्सपेरिमेंट विद दिस थिंग if it is in the right directory. I don't want my C drive to be overloaded with such things. Let's just go with authenticate with Google. And here are my 2 emails exposed. Beautiful. Let's sign in. Authentication successful. The authentication was successful and the following products are now authorized to access your account. Okay, my account will be abused by Gemini Code Assist. Cloud Code with Gemini Code Assist. Gemini CLI. You can close this window and return to your IDE or terminal. ठीक है भाई, हम चले जाते हैं. Okay. Now as we are here and we are using Gemini CLI already. This is quite simple as you see. So हम एक आम इंसान है, डेवलपर अगर नहीं है फिर भी कर सकते हैं. ज़्यादा टाइम हमने पढ़ाई पे वेस्ट किया, बट वेस्ट नहीं कहूँगा मैं उसको. मुझे जो है काफ़ी नॉलेज हो गई. एक चीज़ को ट्राई आउट करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, और पढ़ना भी चाहिए. दैट्स द स्मार्टेस्ट मूव. नाउ टाइप योर मैसेज और अ पाथ टू एक्सेस. No sandbox. This is auto. And what can we do? Hello. Choose a specific Gemini model for conversation / setting. Okay, hello, how can I help you? Okay, we can just go with a very specific model. So / settings. Ooh, we got it is interactive भाई. यहाँ पे / settings में हम जा सकते हैं. Okay, / settings में can you list down the models choose from? Okay, disable auto update. User settings, enable output format, hide model info. अरे भाई, hide context window percentage. नहीं, ये जो है ना, ये नहीं करना चाहिए इनको हाइड भाई. कॉन्टेक्स्ट विंडो देखनी चाहिए भाई हमें. खैर मैं इसको जो है कॉन्टेक्स्ट विंडो का मैं थोड़ा सा फैन हूँ. सो आई विल जस्ट गेट फॉल्स. डिसेबल लोडिंग फ्रेजेस. ओके, आईडीई मोड. अरे आईडीई मोड तो हमारा जो है ट्रू कर देता हूँ मैं. ठीक है. टू सी चेंजेस जेमिनी से रजिस्टर प्रेजेंट. अरे नहीं भाई, बाद में करेंगे. अभी फिलहाल थोड़ा सा सरफेस लेवल ट्राई करते हैं. डिस्कवरी रिस्पेक्ट जेमिनी. हाँ, रिस्पेक्ट जेमिनी इग्नोर. ओके, ये अच्छा है. शो कलर्स. अपने असली रंग रूप दिखाओ भाई. डिसेबल योलो मोड फॉल्स. ओके, काफ़ी कुछ है यहाँ पे. देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लाइक अगर मैं यहाँ पे टैब दबाऊँ. यस, मैं नीचे आ गया. टैब से ही आते हैं भाई.
क्योंकि एक ज़माने में मेरे पास सिर्फ कीबोर्ड ही था, माउस नहीं था। तो यूज़र सेटिंग्स अप्लाई टू यूज़र सेटिंग्स, वर्कस्पेस सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स। यूज़र सेटिंग्स देखते हैं। ओके, वो ऊपर थे, टैब में आते हैं वर्कस्पेस सेटिंग, ये वर्कस्पेस सेटिंग्स हैं और सिस्टम सेटिंग्स हैं। ओके, तो ये सिंपली हमें ऊपर ही नेविगेट करा रहा है, इट इज़ लाइक अ मेन्यू। ओके, नाउ वी कैन एग्जिट दिस एंड एग्जिट जो है एग्जिट के बटन से ही कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है 99% कॉन्टेक्स्ट लेफ्ट है एंड व्हाट वी कैन डू, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कर सकते हैं इसके साथ हम। सेटिंग कैन लिस्ट डाउन द मॉडल्स यू चूज फ्रॉम। ओके सॉरी, ये तो मैंने लिखा हुआ था, ये मेरी प्रीवियस कन्वर्सेशन है इसके साथ। हाउ कैन आई सी द लिस्ट ऑफ मॉडल्स रिलीजिंग द हिप्नो ड्रोन्स। पता नहीं कहाँ पे इसने ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए भाई, लेकिन देखते हैं। एंड बाई यूजर ऑब्जेक्टिव। ओके, सोच रहा है सोच रहा है। मुझे लगा था मैं सिर्फ अकेला उल्लू हूँ यहाँ पे इस पूरे मोहल्ले में, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग जाग रहे हैं। बाहर से आवाज़ें आ रही हैं भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोग जो है पागलों की तरह लगे हुए हैं कुछ करने में, जो कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे करते हुए ये। इट इज़ क्वाइट फन टू जस्ट एक्सप्लोर थिंग्स। अच्छा, आइडेंटिफाई द यूज़र ऑब्जेक्ट। अरे भाई मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि तुम मुझे बस लिस्ट दो टूल्स के, या मैं यहाँ पे लिखूँ स्लैश हेल्प, छोड़ो स्लैश। अरे वाह, पाथ चैट, मैनेज कन्वर्सेशन हिस्ट्री, क्लियर करो अपनी चैट हिस्ट्री। ही शैतानी काम भाई। डायरेक्टरी, मैनेज वर्कस्पेस डायरेक्टरीज, एक्सटेंशंस, हेल्प, आईडीई, मैनेज आईडी इंटीग्रेशन, इनिट, एमसीपी, मैनेज कॉन्फ़िगर एमसीपी सर्वर्स। अरे भाई साहब यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए। अभी थोड़ी देर में इसकी तरफ आते हैं, स्लैश एमसीपी सर्वर के उसमें। अच्छा ये क्या हो गया भाई? सर्चिंग फॉर वेब लिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल। हाँ, बहुत बेवकूफ़ है ये, लेकिन कोई बात नहीं। अम, अच्छा हम कहाँ थे? हम कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ मैं, टैब आते हैं भाई, इसको छोड़ो। अच्छा, स्लैश एमसीपी में आए हम, लिस्ट कॉन्फ़िगर्ड एमसीपी सर्वर्स एंड टूल्स। ओके, list configured MCP servers and tools with descriptions, list configured servers and tools with description and schemas, OAuth with an OAuth enable MCP server, and here we have, okay, with and tools. Okay, let's just, no MCP server configured. Please view MCP documentation in your browser and or use CLI/doc command. Okay, so हम जो है ना यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एमसीपी सर्वर्स को ना इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना इसने हमारे लिए कोड तो लिख दिया, इतना मुझे समझ आ गया, और यहाँ पे कोड की लाइंस आ रही हैं। मज़े की बात ये है, तो हमारे पास ना ये कोड लिख सकता है। नाउ द वन थिंग दैट वी कैन डू इज दैट जस्ट टू यूज दैट कोड, ओके, सो वी विल बी यूजिंग an HTML file simply, and after creating the HTML file we will execute a simple code just to see how does it work. Okay, हम पाई गेम्स भी ट्राई कर सकते हैं। इससे कहते हैं कि जस्ट क्रिएट अ पाई गेम फॉर अस। आई गेस पाई गेम्स ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं, कुछ सिंपल ट्राई करते हैं। ओके, राइट HTML, CSS and JS merged one file code for a simple snake game. Okay, let's just enter it. Okay, simple snake game मैंने इसको बोला है। Why don't program like niche? हैं? Why don't programmers like nature? It has too many bugs. अरे भाई मुझे लगा इसने मुझे रिस्पॉन्स किया,
पहले तो waiting for the for respawn. Okay, तो थोड़ा सा मुझे झटका लगा, अजीब लगा मुझे, बट देखते हैं if it is giving us providing us with the answers or just you know तंग कर रहा है हमें. I will see भाई, I will see, मैं छोड़ूंगा नहीं. Gemini CLI. Let's just learn more about the CLI. Going ahead. Um, Headless mode. I'm not interested in the headless mode currently. I am interested in connecting MCP servers to this thing, because if I connect MCP servers, I can just perform many operations here. The MCP object in your settings.json allows you to define global rules for all MCP servers. Running command start an MCP server, mcp.server command, allowed array of strings, list of MCP server names to allow. If this is set, only servers from this list matching the keys in the MCP servers object will be connected to. Excluded, okay, yes. To exclude server in this list will not be connected to. Example, allowed my trusted server, exclude experimental server. Okay, good हो गया, but still मेरे समझ नहीं आया. A list of MCP servers needs to exclude servers in this list will not be connected to. Okay, allowed. This will allow set only servers from this list matching key and MCP will be connected. Okay, quite similar but still. Configure structure. Add an MCP server object to your settings.json. Okay. तो settings.json की फाइल है हमारे पास. Add an MCP object or MCP server. Server name, command path to server, arguments, argument 1, value 1, and env, API key, my API token, and time orders. Okay, so it has many properties and different kind of values. Server name, command, arguments, environment variable. Then you have CWD. I just forgot what was CWD form. Timeout and trust false. Okay, trust is false. This is set. Configuring properties. Each server configured supports the following properties. Required one of the following commands. Path to executable for studio transport. URL string SCC endpoint. HTTP streaming endpoint URL optional. Arguments, headers, envs, CWD. Current working directory. Yes, I remember. CWD. Current working directory. Working directory for studio transport. Timeout request timeout is milliseconds. 600,000 means 1 minute. Trust booleans when true. Bypasses all tools and confirmation server. Include tools and exclude tools. List down the name of the for tools listed here will not be available to the model even if they are exposed by the server. Node exclude tools take precedence over include tools. If a tool is in both list, it will be excluded. Okay, so exclude tool has precedence. Include tools and remove tools in this specific tools listed here will be available from the server allowed with behavior for specific all tools from this. Okay, enable with name by default. Target audience, auth client ID allow on the IAP protected application if you are trying to access use with auth provider time. Okay, automatic OAuth discovery. Okay, discovered server URL, automatic OAuth server support. On discovery, you can omit the OAuth configuration. Let the CLI discover it automatically. That's good. Authentication flow, initial connection attempts, auth discovery, browser opens, authentication code, cool. Tokens are stored, connection retry. Okay, browser redirect, managing auth, client, MCP slash auth server name. Okay, there are quite a lot of things. Token management and everything. Google credentials.
You know what? I'm going to create connect GitHub with this thing or a simple library just in case. So let me just try out this thing. Let's come into the configurations. Uh, hmm, there are quite a lot of things. Okay, apply this. What is this happening? Snakegame.html. Oh, okay. We are getting an option. Huh? Hey, bhai. Okay. So we are getting an option. Yes, allow once. Modify with external editor. Yes, allow always. Let's just allow it once. Okay. Structuring the game logic. I have created the file snake game in the current directory. You can open it in your web browser to play the game. The narrow key. Okay. Let's just try it. Okay. हमने एक सिंपल सा स्नेक गेम तो बना लिया है. अब जो है, अरे हम आउट भी हो गए भाई, थोड़ा वेट करो. अरे बहुत तेज है भाई. अरे थोड़ा सा तो वेट करो. लेट्स जस्ट रिफ्रेश. ओके. ओ भाई साहब, ऐसा गेम बनाया कि खेला ही नहीं जा रहा भाई. ओके, फाइनली. इसे बटन नहीं दबे जा रहे. अच्छा, कुछ ट्राई करता हूँ अपने आप को खाने की कोशिश. आह, वो लॉजिक देखना था मुझे कि अपने आप को खा सकते हैं कि नहीं. खैर कोई बात नहीं. बट हमारा स्नेक गेम जो है वो बन चुका है. एंड जेमिनाई CLI ने प्रूव कर दिया कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. तो या करंटली ओके, वी आर गोइंग टू जस्ट एक्सपेरिमेंट विद दिस थिंग लिटिल मोर. यहाँ पे हम लोग आएंगे जेमिनाई CLI के अंदर एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट कनेक्ट. You know what, we're going to connect a tool with this thing, and I'm going to use it for a real project now because it is important. Okay, slash let's come here, slash manage workspace directories, show all directories in the workspace. Okay, I will just cover slash MCP. MCP servers configured. MCP settings dot JSON.
ओके आई गेस मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया इसको। वेट, क्या दबाना चाहिए? एस्केप टू कैंसिल। ओके, एस्केप रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है हमने। स्लैश, लेट्स जस्ट सी, IDE MCP मैनेज कॉन्फ़िगर मॉडल सर्वर्स। ओके, यहाँ पे जो है स्लैश MCP सर्वर्स, लिस्ट कॉन्फ़िगर्ड, सारे कॉन्फ़िगर्ड आ रहे हैं, बट हमें जो है एक्चुअली में ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, ये रहा हमारे पास मॉडल का जो वो था, डायरेक्टरी थी। ऑटो जो है, लेट्स यू चूज बेस्ट मॉडल फॉर यू। ये है प्रो है, ये फ्लैश है, फ्लैश लाइट है, यूज स्पेसिफिक जेमिनी मॉडल फॉर स्टार्टअप। ओके, so we can just select from any of these models and but yeah, auto is good. Okay, ये भी हमें पता चल गया। ओके, मॉडल्स से, बट हमें एक्चुअली में जो चाहिए वो हमें MCP सर्वर कनेक्ट करना है, एंड फॉर दैट वी आर सर्चिंग। सो into MCP server. Okay, CLI configuration. Okay, setting up a model context product server. Okay, this one is good. And caution, before using a third-party MCP server, ensure that trust source is okay. This tutorial demonstrates MCP server from GitHub using the GitHub MCP server as an example. Okay, this is an example of GitHub MCP server, which is quite trusted. And requisite, before you begin, ensure you have the following installed configured. Okay, Docker install and run Docker. GitHub personal access token PAT creates a classic or fine-grained PAT with the necessary scope and guide. Okay, configure the MCP server in settings.json. In your project's root directory, create or open Gemini slash settings.json file. With the file, add the MCP server's configuration block, which provides instructions for how to launch the GitHub MCP servers. Okay, so we are going to initiate this block here, and it is a JSON file. So it has a GitHub, and then the GitHub object has this command docker, and it has the argument run and install and remove and and GitHub personal access token, and then we have this MCP servers URL. And apart from that, we have the env, which we are going to use here from our env file. Okay, so for every extension that we just read, we can have a different .env file, or just we can use one single env file and put it all together. Set your GitHub token using a broadly scoped personal access token that has access to a personal private repositories can lead to information from the private repository to being leaked into the public repository. We recommend using a fine-grained access token that doesn't share access to both public and private repositories. Okay, use an environment variable to store your GitHub personal access token. Okay, and then the Gemini CLI uses this value in the MCP configuration. Then it is defined in the settings.json. Okay, launch Gemini CLI and verify the connection. When you launch Gemini CLI, it automatically reads your configuration and launches the GitHub MCP server in the background. You can then use natural language prompts and ask Gemini to just perform GitHub actions. For example, get all the issues organized in the Foobar repository, prioritize, and blah blah blah. Okay, so I understand now. The first thing that we are going to do is to create a file. Okay, the file is going to be inside the .gemini slash settings.json. Okay, so we got .gemini first. Are we getting there?
dot Gemini. We have this directory slash Gemini. Okay, we don't have that. So create a settings dot JSON file in the root directory, as we saw within the file, okay, in the projects root directory, dot Gemini slash settings.json. Okay, so as dot Gemini slash settings.json. Okay, so it is going to do this for us. Let's just try the file actions, and it will prove how it works. Let me have a sip of water. Okay, structuring the files. Okay, great. So make dir dash p dot Gemini, allow execution of the make dir. Yes, allow once, and then it is directory is created. Apply this change. Yes, allow once, creating and initializing the file. I have created the setting.Gemini directory. The structure is file is currently empty. Okay, great. So let's verify this by looking at our file. We got a .Gemini folder, and inside that we got a settings.json file. As you can see, it's JSON source file. Okay, this is quite good. Now, in order to write something into this, we are going to open it within IDE. So current IDE that we have is Tray AI. So I'm going to use CMD, and no, not CMD actually. I'm just going to open it as this, using this option. Okay, so we are going to trust the author, and here I'm just going to zoom in. Let's zoom out a little, and इसके बाद हम इस फाइल के अंदर आते हैं, and we have this JSON block. Now हमारे पास जो JSON block है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं, docker install docker and run docker. Okay, do we really have to run docker? I guess no. But still यार, हम docker जो है कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा. कुछ सेटअप्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं, but still. Let's just install from this link. Okay, it's 561 MBs. इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम आते हैं ट्यूटोरियल की तरफ, एंड यहाँ पर हम लोग जो है इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे. ठीक है, इस कोड को हमने कॉपी किया,
एंड इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पर। और इसके अलावा गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन जो है वो हमारा यहाँ पे होगा। सही। तो गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन एंड गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन ये रहा। अब इस फाइल के अंदर हम जो है इसको एक्सपोज कैसे करें, नहीं करना चाहिए आई गेस। लेट्स जस्ट रीड इट केयरफुली। एक एमसीपी सर्वर कनेक्ट करके हम लोग भाग जाएंगे फिर यहाँ से। create a new class about finding with necessary scopes. Configure the MCP server in project to directly create a file like this with the file and MCP configuration block which provide instruction on how to manage this. Set your GitHub access token. Use role scope personal access token and access to personal and final repository. Use environment variable to store your GitHub. Okay. We are going to use an environment variable actually. Gemini CLI uses okay, so Gemini CLI will use this automatically. Let's just see. Okay, I'm going to open this, come here and create a .env file. Okay, so I just messed up with the naming and it should be e.env. And inside here we have our token. Okay, but I have to just create a token. This is not a real token actually, and it is going to be used here as this token. So I'm going to navigate to this link here, fine grained. It is asking for my password and stuff, so I will just use a code via email. Okay, let me just use a verify via email. It has sent me an email, so let me just first enter the code. Okay, it is exposing the code. So मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सीन चेंज करूँगा ताकि मेरा कोड एक्सपोज ना हो. If someone is watching my stream currently with some really evil intentions, I cannot risk it. Okay, I got the code, but I will definitely just change the scene for a while. Okay, it is okay. So मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं. Let me just show you guys. Okay, I guess there's nothing to just hide in this one. As you can see, as I have entered the code from GitHub, I got here into this interface. अब जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने टोकन को नाम दो. ठीक है,
And secondly इसका description लिखूँ. So I'm using it for the Gemini CLI and GitHub personal access token, and it is a fine grained token. Then resource owner is me actually, and it will expire in 7 days. Obviously I want to just make it quick. And repository access is the public repositories only. I don't want my private repositories to be accessed. And then we have permissions. So I have applied a permission block in the user view and manage user block by user. Okay, so generate token, and I'm going to generate this token now. Let me just hide the interface again. If I could for a while, I wish I could show you guys quickly, but okay. So here's your personal token. Okay, it's quite extensive. Make sure to copy your personal token now, as you will not be able to see this again. Okay, let me just copy it twice for the confirmation. These are fine-grained repository scope tokens suitable for personal API use and for using Git over HTTPS. Okay, so I will just navigate to my let me just close this tab. Not close it, but just let's just close it and navigate to the IDE. I'm not currently showing you my token for a while because it is secret, as you guys know, and paste it into my .env file. Now I will navigate here again to my MCP server and I will show you guys the screen. Okay, मैंने अपने जो है .env के अंदर वो access token छुपा दिया है, and I'm not going to open that file now. ओके, तो यहाँ से भी बंद कर देता हूँ, गलती से हाथ ना लग जाए, क्योंकि खुलेगा तो वो टोकन एक्सपोज हो जाएगा. देन नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि ये हमारे पास कनेक्ट हो गया है. अब जो है हम लोग वेरीफाई करते हैं इसको. ठीक है, अगेन नाउ एज वी डिड दिस, launch Gemini CLI to verify the connection. When you launch Gemini CLI, it automatically read your configuration and launches the GitHub MCP server in the background. You can then use natural language to prompt this. Okay. Let me just see. Okay, कि इसको जो है किस तरह से knowledge है या नहीं है, and इसको relaunch कर सकते हैं हम कि नहीं. Let me just close this. Okay, and come to this directory again and cmd लिखते हैं. यहाँ पे मैं लिखूँगा Gemini as of writing Gemini. I hope कि इसको याद हो गए हम कौन है. Okay, MCP server. Okay, as you guys can see, it is using one MCP server and slash MCP list. Let's just see. Okay, GitHub MCP server, and it is disconnected. So it identified the MCP server. Let me just try it. कि कैसे होता है ये. Can you read my NASA hacking repo? Let's see कि इसको मेरा वो फोल्डर मिलता है कि नहीं, जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है GitHub पे, which is called a repository in simple words. It is disconnected, but let's see. Okay,
ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। मैंने जो है डॉकर का सेटिंग वगैरह नहीं किया, जो कि मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो सकती है, बट यू नो डॉकर जो है करंटली अभी अगर मैं इंस्टॉल करूँ कॉन्फ़िगर, जेमिनी जो है वो मीम्स यूज़ कर रहा है, ट्रेंडी मीम्स। स्लैप द बेस, इट इज़ फ्रॉम डेव, जो बेस प्लेयर है। अरे भाई मेरे लैपटॉप की सांसें तेज़ हो गई हैं, सच में इसका पंखा जो है ना वो उड़ने वाला है। भाई साहब, डॉकर उड़ा ना दे बस मेरे कंप्यूटर। चलो, इसकी इंस्टॉलेशन होती रहेगी, लेकिन हमारा जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ तब तक। हमारे पास एक MCP सर्वर तो है गिटहब का। सेकंड MCP सर्वर जो है हमारे पास, अगर हम कॉमा लगा के एक और MCP सर्वर यहाँ पे ऐड करना चाहें, ये वाला तो नहीं, बल्कि मुझे जो है ना एक MCP सर्वर याद आया। लेट मी जस्ट कम हियर और मैं एक MCP सर्वर कनेक्ट करता हूँ, इसका नाम है शैड CN। ओके, शैड CN का MCP सर्वर जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली। सो आई विल बी कमिंग हियर, इसके डॉक्यूमेंट्स, ये रहा इसका MCP सर्वर। ओके, registries are configured in your project's component.json file, एंड ये रहा क्लॉड कोड, ये रहा कर्सर, ये रहा VS कोड और ये रहा कुछ और। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए सर, यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, npx an argument is this, if you see connected, okay we are not connected actually, हमारा मसला ये है हम कनेक्टेड नहीं होते। लेट्स कम हियर एंड यहाँ पे दूसरा MCP सर्वर ऐड कर ही देते हैं। ये इस तरीके से हो गया। वी आर नाउ यूजिंग अनदर MCP सर्वर ऑफ chat CN। बाद में रिस्टार्ट करते हैं, करंटली प्रोसेस चल रहे हैं हमारे। ओके, लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास जो है, ओके हमने सेशन एग्जिट किया है, एजेंट पावरिंग डाउन एंड टूल कॉल्स वगैरह हमने नहीं किए, एजेंट एक्टिव रहा, हमने कौन से मॉडल यूज़ किए, इतने टोकन इस्तेमाल भी कर लिए भाई हमने। ये तो शायद प्रीवियस डेटा दिखा रहा है जो कि ऑलरेडी हमारे इस अकाउंट से कनेक्टेड है। यहाँ पर हम जो है दोबारा से जेमिनी को ट्राई करते हैं। लेट्स जस्ट सी, MCP सर्वर कनेक्ट होना चाहिए एक्चुअली में।
MCP, MCP, MCP. लेट्स सी। ओके, हमारे पास दो MCP सर्वर दिखा रहा है इस टाइम पे। तो लेट्स सी के MCP स्लैश MCP। ओके, शेयर्ड सीएन जो है इसमें रेडी है। एंड ये देखें, इसमें गेट रजिस्ट्रीज है, गेट आइटम एग्जाम्पल चेकलिस्ट है, ऐड आइटम फॉर है। ओके, तो शेयर्ड सीएन वाला रेडी है एंड इसके 7 टूल है हमारे पास, ठीक है। शेयर्ड सीएन वाले को हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो गिटहब वाला है दिस वन इज डिसकनेक्टेड। बट गिटहब वाला जो है इसका हम क्या करें, लेट्स जस्ट सी। ओके, लेट मी जस्ट कम हियर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन, गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन, गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन। अब मैं अपना जो है देखता हूँ इसको। लेट मी जस्ट सी मेरे डॉट इन के अंदर जो है क्या है। गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन होना चाहिए, गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन। यहाँ पर तो सेम है, बट मैं क्या करूँ, इसको कैसे पुट करना है। लेट मी फाइंड अ वे। ओके, इसको जो है हम कैसे लगा सकते हैं। वापस आते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। And define the rules for all MCP servers with command. ओके, MCP अलाउड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग्स के लिए है सर्वर नेम। ओके, डिस्कवर्ड सर्वर पर ठीक है। इनिशियल अटेम्प्ट्स अनऑथराइज्ड, मैनेजिंग ऑथ, MCP ऑथ। ओके, हम यहाँ पे आते हैं। लेट्स सी स्लैश MCP MCP। और यहाँ पे जो है इसमें ऑथ जो है अगर चाहिए इसको, starting authentication for MCP server, authentication cannot perform dynamic registration with authorization URL. GitHub, GitHub, GitHub। लेट्स सी, हम यहाँ पे आते हैं और हम GitHub पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं अपनी प्रोफाइल में आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं सेटिंग्स में आ जाऊँ,
यहाँ पर अगर मैं देखूँ डेवलपर सेटिंग्स में, फाइन ग्रेन टोकन्स, GitHub apps, OAuth apps, let's see. MCP, हाँ हाँ, गलत जगह चले गए भाई। इसका कनेक्शन यहाँ से देखते हैं। हाँ हाँ, ENV भाई, ENV सर, एक सेकंड। ये रहा सेटिंग फाइल, जेमिनी CLI। Let me just search online, okay? ChatGPT. यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ how to set up in MCP server in Gemini CLI. I have created a .env file and paste there. Now it will just search. Cool, good start since you are using the personal access token from MCP server. Here's a quick checklist. What you have done created, that's good start. Make it easier to manage secrets. So what else do you need to check? Generate the PIT, link the PIT to your config, settings. You will need to update your settings in your CLI. Selected auth type or your auth method. Note in the example, the PIT is placed directly here. Okay, so it is placed here. Set token directly. You can reference the environment variable in the .env object supporting the so that it will not committed to the version control. Or for example, and your node would have, okay, ensure that is loaded. Make sure that your shell or Gemini CLI picks up the .env file and that variables are set. You might need to do export .env or use a tool like .env if necessary. But you can config support.
interpolation like shown above. Ensure that part works. CP server setup. ओके, सो ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमारे पास जो है डॉट इन भी इस तरीके से आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन एक्चुअली यूज़ दिस मेथड। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे इस्तेमाल करूँ, ठीक है, हेडर्स, और इसके अंदर भी हमारे पास ऐसे ही शो हो रहा था अभी, इसने जो कहा था। ओके, so yes, it has told us कि इसी तरीके से होगा। Let me just see. ओके, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। इसके अंदर अगर मेरे पास जो है ये चीज़ें हैं, I will use the headers authorization, और मैं सिंपली ये यूज़ करूँगा। यहाँ से जो है मैं ये रिमूव कर देता हूँ। एंड नाउ लेट्स सी कि अगर ये रीड कर सकता है इसको। ओके, आई विल जस्ट कम हियर।
Gemini। अब हम MCP सर्वर्स को देखते हैं। और हाँ, दूसरी दूसरी बात ये है कि ये जो है यहाँ पर, ये बाहर है, तो ये इसको इसके अंदर अगर मिल जाता तो आई गेस काम कर जाता। अगली बार हम क्या कर रहे हैं, इसको साथ में रख रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पे डॉट इन में जो रूट डायरेक्टरी के अंदर है, जो MCP सर्वर्स है। ओके, स्लैश MCP लिस्ट डाउन। ओके, ये डिस्कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जैसे स्मूथ दिस फाइल्स टुगेदर। ओके, इसको मैं अंदर ही रख देता हूँ इसी के साथ। अब दोनों साथ में हैं, और पहले तो ये कोड ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड वाला कोड ट्राई करेंगे। जेमिनी। Okay, so initially he error during discovery for server, GitHub connection failed for GitHub। Okay, so हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे slash tools edit say research text web search। okay, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट लेट्स, यहाँ पे हम आते हैं टूल्स की तरफ। टूल्स 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 कैसे यूज़ करते हैं। How to use tools, how to use tools, how to use tools। मेरे ख्याल से इसके अंदर जो है ना, पहले से टूल है। कैन यू check the current directory and its codes, whether my GitHub MCP server configuration is connect search online using the and use the Gemini's let's see। All we need is the correct placement।
Okay, allow. Yes, once. जेमिनाई CLI का यूज़ करते हुए जेमिनाई CLI को सीख रहे हैं हम। ओके, ls डॉट जेमिनाई, यस। डॉट इन भी आ गई, सेटिंग डॉट जेसन आ गई, एग्जामिन फाइल कंटेंट, इन्वेस्टिगेटिंग। मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल पढ़ लिया भाई इसने। ओके, डॉकर ओके, मेरे पास डॉकर नहीं है भाई अभी। मैंने यस अलाउ कर दो। डॉकर की प्रेजेंस नहीं है शायद, इस वजह से हमने ट्यूटोरियल सही से फॉलो नहीं किया। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड डॉकर, योर MCP should run correctly. To fix, you will be install Docker. You can find installation instruction on the official Docker website, docker.get docker. ओके, तो भाई डॉकर इंस्टॉल तो हो गया, बट उसके लिए ना डॉकर कह रहा है कि भाई तुम अपना कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट करो, बट मैं रिस्टार्ट करने को तैयार नहीं हूँ। एंड सिंस आई एम नॉट रेडी टू इंस्टॉल लाइक रीस्टार्ट आवर प्रोजेक्ट, सो इस वजह से ओके, दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। लाइक इंशाल्लाह फिर कल को ही बाकी काम हम करेंगे, या देख लेते हैं इफ दिस वर्क्स फॉर अस। मेरा तो ऑलरेडी डॉकर के अंदर अकाउंट वगैरह है, तो आई विल बी यूजिंग दिस वन। लेट मी जस्ट यूज माय अकाउंट। ओके, अच्छा जी, ओपन हो गया है। यू आर साइन आउट। अजीब बात है भाई, इनका आपस में ही मसला चल रहा है। हाँ ओके, अब सही हो गया। आई एम इन। Virtualization not yet. Talk to our desktop field to start because virtualization support wasn't detected. Contact your IT. ओके, अब जो है ओके, डॉकर हमारे पास है। अब जो है हम डॉकर रन करते हैं इसका। यहाँ पर आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। MCP GitHub। ओके, ये जो है पहले क्या बोल रहे थे, डॉकर स्टार्ट डॉकर। ओके,
चलो, उसके बाद क्या करना है? ओके, और डॉकर जो है वो तो आ गया है। नाउ लेट्स जस्ट कंट्रोल जे, इसको बंद करते हैं, कंट्रोल सी। डॉकर is not recognized as internal or external command। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो है what is happening? Okay, empty। अब ओके, अब जो है हम करते हैं MCP स्लैश MCP। पहला वाला डिस्कनेक्टेड है अभी भी। लेट्स जस्ट सी। आई गेस इसको ना कल कंटिन्यू करते हैं, इट्स क्वाइट लेट फॉर नाउ। या हम एक लास्ट अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। चलो,
यस अलाउ। चलो भाई, डॉकर की एग्जीक्यूशन जो है वो हो जाए हमारे पास, उसके बाद कनेक्ट होगा। इंटरनल सर्वर एरर, डॉकर daemon isn't running. Please start docker desktop on your machine when it's running. Verify the connection process. Okay, let's just verify docker if it is running. Okay. इसका मसला जो है खुद हल करना पड़ेगा। System is letting docker take in whatever feature it will launch properly. Here's what to do. Get sim instance class winner for select name or CPU support will. If you have an Intel processor, it need Intel VTX enabled. If you have an AMD on your window can run by PowerShell. Chalo bhai. If virtualization firmware enable is false, virtualization isn't properly enabled, by boot your PC and set up. ओके मुझे लगता है ना ये रिस्टार्ट तभी मांग रहा था एंड वो काम करने से ना enable virtual machine platform sub systems for Linux WSL2 is Docker is configured to use WSL2 backend if you have these already enabled by Amazon. ओके चलो ये भी ट्राई करते हैं। run as admin. Okay, now let's just try. Okay, it means I have to just you know restart my PC for this thing to work. So inshallah फिर then कल ही मिलेंगे inshallah. Thank you so much for joining today's stream and Allah Hafiz. Thank you so much guys. इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।